Jai Hind children, welcome back to your maths class. So I have told you to go through to read time conversions, how to convert hours into minutes, minutes into seconds, or hours into seconds. I hope you all have gone through. Now let's revise and learn some more rules based on time conversion. Now children, you have to remember few things that short form of R, you can write it as H. Okay, wherever you see H, that will indicate hours. Then M is for minute. Okay, everybody please kindly tick this box. Then S is for second. Now hours into minutes. First, you should know how to convert hours into minutes. As you already know, this you have already studied in class third as well, that 1 hour is equal to 60 minutes. Yes or no? Yes. Then you also know that 1 minute is equal to 60 seconds. Now to convert hours into minutes, we multiply by 60. Okay. So in measurement also we have done that whenever we are converting, whenever we are going from bigger unit to smaller unit, we are multiplying. Here also hours, it is a bigger unit and minutes is a smaller unit. So whenever you are going from bigger unit to smaller unit, children, you have to multiply. We multiply by 60. Why by 60? Because we know that in 1 hour, 60 minutes are there. In case of extra minutes given, we will add them to the result. For example, 5 hours. Let's take an example. For example, you have to convert 5 hours. We know that 1 hour is equal to 60 minutes. So 5 hours will be 2 hours. Beta, what will be 2 hours? अच्छा आप 2 hours का बताओ. 1 hour में 60 minutes है, 2 hours double हो जाएगा. Yes, 2 hours, 2 and multiplied by 60, 120 minutes. But children, in this question, we don't have to find out for 2 hours. We have to find out for 5 hours. I have just explained you that 2 hours double हो गया. 1 का double 2, तो 60 का double हो जाएगा 120. Or you can multiply it by 2. Now let's find out for 5 hours. 5 hours, what will you do? You are going to multiply it by 60. And yes, you have to show calculation. Please don't forget. In exam also, make a rough column and show calculation. So 5 zeros are 0 and 5 times 6 is equal to 30. That means in 5 hours there are 300 minutes. Suppose this question, the question has some changes. Let's take it 5 hours, 15 minutes. Now what you are going to do? Now you have hours as well as minutes. In above statement, here only you have read that in case of extra minutes given, you are going to add them to the result. आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा मिनट्स हैं, 5 hours है, 5 hours का पता है 300 minutes हो जाएगा. हाउ? यू हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 5, बट 15 minutes एक्स्ट्रा हो गया. अब वो आवर्स में नहीं है, वो मिनट्स में है, लेस देन 60 मिनट्स है. व्हाट विल यू डू? 5 hours का आपको पता है कि 300 मिनट्स है, तो 300 मिनट्स में बेटा 15 मिनट्स जो एक्स्ट्रा मिनट्स है उसको आप यू आर गोइंग टू एड इट एंड इट विल बिकम 315 मिनट्स. इज इट क्लियर?
Like this you are going to convert from hours to minutes. Hours को जब भी आप minutes में convert करोगे, you will multiply. मल्टीप्लाई करोगे, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? 60 से. व्हाई विद 60? Because we know that in 1 hour 60 minutes are there. That's why we have to multiply by 60. Now question B, example B is 8. This is in fraction. तो मिक्स फ्रैक्शन में है. मिक्स फ्रैक्शन में अगर नहीं भी देखोगे बेटा तो 8 आपका होल नंबर है एंड हाफ आवर, हाफ गिवन है ना, दैट मीन्स 8 आवर्स और आपका हाफ आवर्स, 8.5 आवर्स गिवन है. हाफ आवर का चिल्ड्रन, this few things you should know that when 1 hour is equal to 60 minutes, तो हाफ क्या हो जाएगा? Half hour will be, therefore since 1 hour is equal to 60 minutes, therefore half hour, which you can write it in fraction form or like this also. आपको क्वेश्चन में मिल सकता है हाफ आवर, तो हाफ आवर बेटा 60 का हाफ 30 मिनट्स होता है. अंडरस्टूड? एनी डाउट? आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. 1 hour, since 1 hour is equal to 60 minutes, तो 1 का हाफ, 60 मिनट्स का हाफ क्या होता है? दैट इज 30 मिनट्स. आपकी क्वेश्चन में इट कैन बी इन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और आपको ये वर्ड के फॉर्म में ऐसे भी गिवन हो सकता है. कंफ्यूज नहीं होना है. अब क्या था क्वेश्चन? 8 hours, सॉरी 8.5 hours, है ना? तो 8 का आप पहले फाइंड आउट कर लो. इधर भी देखो 8 का हाउ दे हैव डन, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया. 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 8 को आप फाइंड आउट करोगे 8 आवर्स का. 8 मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट इज 430. और फिर आपका हाफ आवर क्या होता है? सिंस हाफ आवर इज इक्वल टू 30 मिनट्स, तो 30 आप प्लस कर दो एवरीबडी, यू विल गेट 510 मिनट्स. एनी डाउट? तो ये आपका हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 60. पहले 8 आवर्स का फाइंड आउट कर लो, दैट विल बी 480 मिनट्स. देन प्लस कर दो हाफ आवर क्या होता है, इज इक्वल टू 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स प्लस कर दोगे 510 मिनट्स. आई होप देयर इज नो डाउट. इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क इट. नाउ नेक्स्ट, to convert minutes into hours. When we have gone from, when we have converted bigger unit into smaller unit, we are multiplying. When you will convert smaller unit into bigger unit, that time you are going to divide. Vice versa, opposite कर दोगे. So to convert minutes into hours, we will divide. किससे करेंगे डिवाइड? 60 से. द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होगा वो आवर्स होगा, एंड जो रिमाइंडर होगा बेटा वो आपका एक्स्ट्रा मिनट्स होगा. आप उसको मिनट्स में लिखोगे. अब यहाँ पे देखो 260 है, 260 को 60 से डिवाइड करा, 60 टाइम्स 4 240 होता है, और ये एक्स्ट्रा आपका 220 बचा. ठीक है, वो क्या हो गया? 4 आवर्स. क्वेश्चन आपका 4 आवर्स हो गया, एंड आपका जो एक्स्ट्रा मिनट्स है विच इज देयर इन योर रिमाइंडर, दैट इज योर मिनट्स, 20 मिनट्स. ये देखो 4 आवर्स 20 मिनट्स. कोई भी दूसरा नंबर होगा, लेट्स टेक 300. 300 को जब डिवाइड करोगे, अगर 300 पूरा एग्जैक्ट डिविजिबल है, तो आपका क्वेश्चन जो आएगा वही आपका सिर्फ आर इसमें होगा. इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, 320, 300 तो बेटा एग्जैक्टली हो जाएगा 5 टाइम्स में, 5 आवर्स हो जाएगा. ठीक है, बट जो आपका 320 है उसमें क्या होगा? 320 में बेटा 5 टाइम्स में 320 आपका रिमाइंडर हो गया. इसका आंसर होता है 5 आवर्स 20 मिनट्स. नाउ आई हैव यूज्ड short form of hour and minutes. Any doubt? Let's move forward. Now, when you have to convert minutes into seconds, अब जब आपको minutes को seconds में convert करना है,
Now first tell me, which unit is bigger unit, minutes or seconds? Yes, minutes bigger unit है और seconds smaller unit है. So similarly, like you did in hours and minutes, when you have converted hours into minutes, same way में आपको minutes and seconds को convert करना है. Minutes is a bigger unit and a second smaller unit है, तो minute को जब seconds में change करोगे, you are going to multiply. Now question comes, by which number you will multiply? Yes, again you are going to multiply it by 60. Why? Because we know that in a minute, in 1 minute, we have 60 seconds. तो जब हम minutes को change करेंगे seconds में, बेटा, we are going to we are going to multiply by 60. Please, this bear is giving you a tip. Make sure that you follow it, that 1 hour is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds. So 1 hour, अब आपको अच्छा 1 hour में how many seconds are there? There are 60 multiplied by 60 seconds. पहले आप, क्योंकि 1 hour, if you are climbing a stair या आप उतर रहे हो, तो क्या आप यहाँ टॉप से एकदम जंप कर दोगे लास्ट वाली स्टेयर पे? नो, यू विल फॉलो स्टेप्स. पहले इस पे आओगे, फिर इस पे आओगे. सिमिलरली जब आवर्स से आपको बेटा सेकेंड्स में आना है, यू विल नॉट जंप. जंप करोगे तो व्हाट विल हैपन? यू माइट गेट हर्ट. सिमिलरली आवर्स को भी चोट लग सकती है ना, तो आवर्स से पहले यू विल गो टू मिनट. उसके लिए आप 60 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स. नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक. मिनट्स को सेकेंड्स में मल्टीप्लाई चेंज करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 60 एंड यू आर गोइंग टू ऐड एक्स्ट्रा सेकेंड्स टू द result if there are seconds. Now 10 minutes, beta, 1 minute is equal to 60 seconds. 10 minutes will be 10 multiplied by 60, 600 seconds. Here 8 minutes और 20 seconds. यहाँ पे extra seconds given है. तो पहले आप 8 minutes का find out करो. 480, then extra seconds 20 है. Add it. 480 में plus 20 will become 500 seconds. Any doubt? No doubt. Okay, fine, good. Now to convert seconds into minutes, अब आप smaller unit, seconds आपकी smaller unit है, and minute is your bigger unit. You are going to divide. किससे divide करोगे? 60 से divide करोगे. We will divide. Children, you have to underline whatever I'm underlining. You have to underline it. We divide by 60. The quotient is minutes and the remainder is seconds. 310 को 60 से divide करा. 300 300 beta 5 times में, and 10 is remainder, so 5 minutes 10 seconds. Fine. Now last topic of conversion, hours into seconds. hours को आपको seconds में करना है. अभी मैंने आपको ऊपर बताया था that whenever you are coming down or climbing stairs, you cannot jump, है ना? तो जंप नहीं कर सकते, तो ये आवर्स भी सीधा सेकेंड्स पे जंप नहीं कर सकता. तो आवर्स पहले क्या करेगा? पहले वो मिनट के पास जाएगा, मिनट में कन्वर्ट होगा, देन इट विल गो टू सेकेंड. सेकेंड वाली स्टेयर्स पे जाके फिर सेकेंड्स में कन्वर्ट होगा. सीधा ये आवर्स सेकेंड पे आके जंप नहीं करेगा. ओके, तो लेट्स चेंज इट. तो क्या होगा? Either you can multiply by 3600 or you can multiply by 60 minutes and then by 60 seconds. So best thing or the easiest way is to multiply it by 3600 only. So 2 hours, 20 minutes, 10 seconds है. तो क्या करोगे बेटा? 10 seconds already seconds में, 20 minutes you have to convert into seconds. तो we know that minutes से second में जाना है. एक ही stairs है, यहाँ पे hours है, फिर इसके नीचे minutes है, उसके नीचे आपका क्या है बेटा? seconds है.
तो सेकेंड मिनट तो सेकेंड के पास जा सकता है टेकिंग वन जंप, दैट मीन 60 से मल्टीप्लाई करके, बट आवर्स को 2 टाइम्स 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 करना है। उसकी जगह इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीप्लाइंग 60 and then again multiplying it by 60, you can multiply it by 3600। 2 hours को आप 3600 से मल्टीप्लाई करो, you will get 7200 seconds, that is 7200 seconds। मिनट्स को आप चेंज करोगे 60 से मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाइड बाय 60 बेटा 1200 सेकेंड्स। और जो ये एक्स्ट्रा सेकेंड्स होता है उसको ऐड करते हैं, यस और नो। सो यू विल गोइंग टू ऐड इट, सबको ऐड कर दो, द सम विल बी 8410 सेकेंड्स। 2 hours 20 minutes 10 seconds में कितने seconds है, how many seconds are there? 8410 seconds। Any doubt? No. If you have doubt, please let me know. To convert seconds into hours, अब क्या करोगे आप? अब आप सेकेंड से आवर्स पे जाना है, सीधा ऊपर भी क्लाइम नहीं कर सकते ना स्टेयर्स कर पे, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। अभी आप फोर्थ क्लास में हो, कैन यू जंप टू सिक्स क्लास? नहीं जा सकते ना, फोर्थ से कौन सी क्लास में प्रमोट होगी? यू विल गो टू फिफ्थ क्लास एंड देन यू आर गोइंग टू गो टू सिक्स क्लास, फिर आप सेवेंथ में, एट्थ में एंड सो ऑन। तो सेकेंड से आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, पहले आप मिनट में चेंज करोगे, यू विल डिवाइड इट बाय 60। Okay, then what will you get? You will get minutes. Then again you are going to divide the answer by 60 and then you will get hours. Fine. So convert 1,35,000 seconds into hours and minutes. Minutes में कैसे आएगा बेटा? Remainder जो होगा ना, that will be your minutes and quotient will be your hours. When you will divide it, you will get quotient is 37, that means 37 hours and remainder भी आपका आया तो बेटा 30 minutes। Is it clear? ये याद रखना बेटा, सेकेंड से पहले आप चेंज करोगे मिनट में, टू कन्वर्ट इन मिनट 60 से डिवाइड करोगे एंड देन अगेन द आंसर विच यू विल गिव आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 60, वो आपका मिनट में आंसर आएगा। देन अगेन यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 60, फिर आपका आंसर किस में आएगा? आवर्स में आएगा। ये आप फाइन। Thank you, class. Now, in next video, we will do exercise.